वो मैं मैम पिक भेज दूंगी आपको। नहीं, मुझे पिक नहीं भेजना है, आप लोगों को ये सारी चीजें यू आर नाउ रिक्वायर्ड टू रीड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। यस मैम। तो वंस यू स्टार्ट रीडिंग ना, तो ये मिलियन बिलियन ट्रिलियन जो अभी आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है ना, यू विल बी क्लियर अबाउट दैट इवन। सो स्टार्ट रीडिंग, ओके, छोटी छोटी डिटेल्स भी, एटलीस्ट बीइंग स्टूडेंट, इफ यू रीड small details only and start understanding those details, it is, you know, more than enough, okay, because यस मैम। like, हाँ, एक बार डिग्री मिल जाए, फिर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो एंड ऑल, यू विल बी गोइंग मच डिटेल and you may be at least clear about the basics, and then after you can go for fundamental and whatever analysis you want to do, है ना। तो it is fact that right now it is going to bother you, this million billion trillion, आप रीड करोगे डेटा तो आपको जल्दी याद भी नहीं रहेगा, रीड करने में भी प्रॉब्लम होगी, इट हैपन्स, okay, because it's not, yesterday we were talking about the geography, and somebody told कि 6th 7th standard में ही हमने तो छोड़ दिया, so it is not your you know, day to day practice, and that's why you may think it difficult, but that is the reason why you need to read, why you need to read a lot, because at this stage nobody is going to judge, but once you are in employment market, if you are not able to read million or billion, it will be a matter of concern, राइट। तो सीखना है अभी आपको, तो जितना अच्छे से सीख पाओ उतना सीखो, एंड दैट इज द पर्पस, कि जैसे ओवरनाइट आपको फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, या आप कोई 10 कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कर लोगे, दैट इज नॉट पॉसिबल, बट एटलीस्ट वंस यू स्टार्ट रीडिंग, you will have, you know, hold on how you can relate number of variables, and how you can go much in detail relating particular piece of information, like what she told is it is alliance. So why they ultimately took decision to alliance with certain companies, so you need to read rules regarding FDIs and all, and in which industry they are much like in retail it is completely you know, FDI 100% FDI is allowed, so it is very liberal, okay, so you have to differentiate industries in that terms as well, that for which FDI rules are very strict, for which they are very easy going type or very liberal। तो जब पढ़ना शुरू करोगे तो ये सारी चीजें समझ में आएगी, एंड देन यू विल बी एबल टू रिलेट इट विथ थियरी, ओके। सेकेंड थिंग, मैंने वो आपका एग्जाम्पल इसलिए नहीं सुना बिकॉज आई वॉन्टेड टू गिव दैट एग्जाम्पल, like yesterday we were talking about that economy and politics go hand in hand, so this is the best example. Don't you think that after 2014, once this BJP and Narendra Modi is in power, that from that time you know, Reliance is showing what we can say, that exponentially growing graph। बिकॉज मैम हाँ, वो रिलायंस, इंडियन कंपनी है, तो उनको भी गवर्नमेंट प्रमोट मतलब सपोर्ट हाँ कर रही वो थी। तो है ही, गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, पहले भी करती थी, बट ये जो बीजेपी एंड यू नो नरेंद्र मोदी इज हेल्पिंग लाइक एनीथिंग। So I don't want to go much in detail about politics. Politics has another scene and picture, but ब्लैक yes, मनी को my वाइट कर रहा point है। is to, huh? My point is to explain you that economy and politics go hand in hand for each and every country. So if we are talking about economic analysis, we have to, you know, check the political scenario as well, because ultimately government, central bank, all those things are going to affect economic development and money flow and everything, okay, and even after this government like वो भी तो हुआ था, उर्जित पटेल या somebody हाँ, resigned, रिजाइन किया था। हाँ, तो वो भी ज्यादा इंटरफेरेंस लगाता है, एंड दिस आरबीआई हैज टू वर्क एज इंडिपेंडेंट बॉडी, तो उनको लगा कि ये गवर्नमेंट है वो इंडिपेंडेंटली वर्क करने नहीं दे रही है, सो ऑल दिस we are not going much in detail about that talk, but yes, politics and economy go hand in hand। तो आपको कंट्रीज, बाकी की कंट्रीज का पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है एंड ऑल, अगेन यू हैव टू, इफ वी टॉक अबाउट चाइना, so it is showing that it is open economy, but one and open economy, right?
It want to have all kind of information from each and every country, but it won't give or it won't make their information public. So one and open economy आप ये बोल सकते हो चाइना, but why this could happen? Due to government, due to other political power, that since long they have only one party in position. है ना, हमारी तरह नहीं है कि कभी कांग्रेस आ गया कभी बीजेपी आ गया, नहीं. Since decades and they have autocrat kind of तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट विल हैव इन्फ्लुएंस फ्रॉम पॉलिटिकल सिनारियो, मतलब क्या जो आपका पॉलिटिकल कितना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, बेस्ड ऑन दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर्टिकुलर कंपनी विल गेट डिसाइडेड. ठीक है, बाकी लोगों ने भी पढ़ा होगा, सो नेक्स्ट क्लास यू विल गेट चांस, बट एटलीस्ट स्टार्ट रीडिंग. ठीक है, ओके. नाउ we will be talking about this because forecast, if we are talking about forecast, we cannot forget this particular investment bank, Goldman Sachs, and another is Bloomberg. Okay, उनके भी forecast बहुत read करते हैं, तो global level पे you can read about this two things. ये नाम कुछ familiar लग रहा है आप लोगों को? It's an American investment bank. हाँ, बोलो मैम. हाँ, कैसे फैमिलियर लग रहा है? मैम बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. यस, एंड मैम मैंने इसके बारे में पढ़ा था. इसका हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में है, इसके ब्रांचेस हांगकांग और लंदन में भी है. ओके. एंड हांगकांग से याद आया, ये जो चेतन भगत है उन्होंने यहीं पे वर्क किया था हांगकांग के ब्रांच में, दैट यू मे बी नोइंग. एंड countries and investors follow their forecast. Okay, so this slide is मैम मुझे उससे पता चला. हाँ मैम चेतन भगत से पता चला था. हाँ, आपने हांगकांग नाम लिया तो मुझे याद आ गया, अदरवाइज आई डोंट नो व्हाट आई टू यूज दैट एग्जांपल, बट आपने बोला तो मुझे याद आ गया. ठीक है. Yes, this is talking about BRICS and now it is BRICS. So BRICS countries that around 2050, these countries are going to change the scene of entire globe and they will be kind of developed economies and they will be leading the globe. So these are Brazil, Russia, India and China, and S is South Africa. So this is recently added. South Africa is also growing very fast. So that is about BRICS and it has given forecast. Till 2050 they will be dominating the entire globe. Okay? इसके लिए लिखा भी है, अक्टूबर 2003 में ये फोरकास्ट दिया था. So you can go for this forecast not only forecast but regarding lot many details about investments and all, these two things you should follow. One is Goldman Sachs and another is Bloomberg. ठीक है, तो ये दो आप फॉलो कर सकते हो थ्रू गूगल सर्च एंड ऑल रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट्स, everything regarding investments, not only forecast, economic, then fundamental, then industry, every forecast, whichever they may be publishing. Okay, so you can go for that. Now coming to macroeconomic analysis. So government employs two broad classes of macroeconomic policies. One is demand side and another is supply side. Okay. Now talking about demand and supply. So what exactly this is talking in terms of this PPT, like through this PPT? What is demand side and what is supply side if we talk about government policies and macroeconomic policies? What is demand side and what is supply side? मैम क्वेश्चन समझ नहीं आया. Okay. Not from government or macroeconomic analysis point of view of productivity. Let's suppose GDP. Okay.
or productivity of any nation. So for that GDP or productivity, what would be the demand side and what would be the supply side? That is the question. Because you need to think from this perspective when we are going for economic analysis. लाइक मैम आप ये पूछना चाह रहे हो कि सप्लाई साइड पॉलिसीज लाइक एक्सपोर्ट्स बढ़ानी चाहिए, इंपोर्ट्स कम करनी चाहिए, उससे रिलेटेड होनी चाहिए मैम? I'm talking about productivity. Okay. मीन्स डिमांड ओके, बढ़ेगी द तो मोर द सप्लाई बढ़ेगी डिमांड ऐसा? द मोर द प्रोडक्शन. क्वेश्चन नहीं समझ में आया, मैं आपको बताती हूँ. What we are doing macro analysis, we are doing economy analysis, we want to analyze India as a nation, okay, and for that we are taking GDP and all kind of indicators. So if I talk about government policies, so these policies would be monetary policy, fiscal policy, and if for these policies we are talking demand and supply side, what this demand and supply side would be? Demand side would be demand from people like us and demand from industries regarding it. It could be regarding technology, regarding raw materials, any. So what here this demand side means that demand of industries as well as uh, people at large. Okay. And the other side, supply side, would be industries, would be the like whichever sector is contributing to productivity. So not only industries, it could be agriculture, okay, it could be service industry, right? It could be any. So why this is important to be discussed right now? Because whether it is monetary policy instrument or whether it is fiscal policy, regarding fiscal policy, you have to take this two fronts, demand front as well as supply front. Okay, from for demand front, we'll be talking from two perspectives, that is demand of we people and demand of industries. And for supply, any sector, it could be production, manufacturing, it could be service, it could be agriculture. So the entire GDP, makeup of entire GDP, that would be supply side. So how government policies or how this monetary policy or fiscal policy is going to affect demand and supply side at economic level, that we will be doing in macro analysis. Now understood what I mean to ask? अभी समझ में आया मुझे क्या पूछना था? हेलो हेलो Yes, ma'am. ओके, आवाज आ रही है ठीक से? क्यों इतना लेट रिस्पॉन्स आ रहा है? यस मैम वो समझने में टाइम आ रहा है. अच्छा, समझ में आया कि वापस समझाऊं? मैम आवाज तो आ रही है पर बहुत कंफ्यूजन है. हाँ वही कंफ्यूजन बहुत पूछो, कंफ्यूज. क्या कंफ्यूजन है? एक बार में समझ नहीं आएगा, 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा तब आएगा. ओके, अभी तक जो पढ़ा वो क्या था? फर्स्ट वी टॉक्ड अबाउट टू टाइप्स, एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस, एक होता है टेक्निकल. फर्स्ट वी आर टेकिंग फंडामेंटल एनालिसिस. ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस विल टॉक एट थ्री लेवल्स. वन इज इकोनॉमिक लेवल, सेकंड इज इंडस्ट्री लेवल, थर्ड इज company level, right? Now first we have started with economic level. Okay, economic level is this macroeconomic analysis could be used as synonym for economic level analysis, right? So we are going for the first phase of fundamental analysis, that is macroeconomic analysis, right? उतना समझ में आया? यस मैम. यस मैम. Okay. उसके बाद मैंने एक्सप्लेन किया कि नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टू इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी. ओके, so we have to analyze monetary policy and fiscal policy, how it is going to affect the entire economy. Okay, I think these are familiar terms to you ना, इकोनॉमिक्स में पढ़ा था आपने monetary policy and fiscal policy. यस मैम. यस मैम. Okay? हाँ.
So now why we are learning it again? To check its impact on economy. Okay, first as entire economy in general, and then at a second level. First level you will be doing analysis for the entire nation, entire economy, and next level you will be going for particular industry in which you are interested, right? So next I try to explain you is that this policy, whether it is monetary policy or a fiscal policy, you have to analyze its impact from two fronts. One is demand front, another is supply front. Okay? Now, what is demand front for the entire nation? That is demand from people like us, population. Population क्या demand करेगा? And second, it could be intermediate demand of industries, like what companies are demanding, which tools, which equipment, which technology, which raw materials, okay, they are demanding. So this is about demand side impact of monetary policy and fiscal policy on demand side. That is one thing we are required to analyze. Another is supply side. Supply side is production, nothing else, production. But it could be production of corporates, it could be agriculture, it could be services. So entire makeup of GDP. So how your monetary policy and fiscal policy is going to affect your supply side as well as demand side, both front we are required to check. अभी clear हुआ what I am trying to explain? ओके मैम, Yes, हाँ ma'am. मैम समझ Yes, गए। ma'am. Okay. Okay. So that we are talking right now. Now, traditionally, the focus was mostly on fiscal and monetary policies and the two major tools of demand-side economics. But from 1980s onward, supply-side economics has received a lot of attention. So every government has to decide whether they want to frame rules to affect demand side or to affect supply side. Now, what monetary policy and fiscal policy do? It directly affects demand and it indirectly affects supply. So, government has to think whether they want to employ direct measures and they want to frame certain rules which directly going to affect demand, or they want to indirectly affect supply. So that we will see in next slide. Okay. So whenever you are going for analysis, you need to check your monetary policy and fiscal policy if you are going to analyze India. But if you are analyzing any foreign country, yes, you have to check with their monetary policies and fiscal policies and what is their philosophy. Whether they want to directly impact or indirectly impact. Whether their rules and regulations are pointing towards supply push, or they are affecting your demand directly through certain tools and all. Like we have repo rate, reverse repo rate, then CLR, SLR, CRR, then means of your monetary policy, right? So for each and every time period for which you are doing analysis, you need to check that whether for that particular time government is taking direct means to control or indirect means through giving push to supply side. Okay, so that you are required to analyze. मैम, so changes in interest rate and tax rate will automatically affect the supply and the demand in the economy, Yes, right? yes, exactly. Yes, exactly right. And that was the purpose to Okay, explain this slide. Okay, exactly right. But through this rules, you next level analysis is what you are required to make out the government's thought process and philosophy, that they have adapted direct tool to affect demand, or they have adapted certain indirect tool to affect supply. So what matters if you are comparing countries? So if you are comparing countries, what matters? Government's thought process, government's philosophy. Which philosophy they are following? That to control it directly is better, or to control it indirectly is better. Now what is direct, what is indirect? Next subsequent slides you will see. Okay?
तो जैसे रिचा ने बताया एग्जैक्टली राइट कि मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी के जो मेजर्स है वो डिमांड और सप्लाई को कैसे इफेक्ट कर रहे हैं एंड अल्टीमेटली विच एवर इंडस्ट्रीज वी आर टारगेटिंग उसको कैसे अफेक्ट करने वाला है, दैट यू आर गोइंग टू एनालाइज. बट अगेन इफ यू आर कंपेयरिंग कंट्रीज यू नीड टू चेक विद द फिलोसॉफीज ऑफ द गवर्नमेंट कि उनको डायरेक्ट में ज्यादा ट्रस्ट है या इनडायरेक्ट में ज्यादा ट्रस्ट है. ओके, फर्स्ट इज फिस्कल पॉलिसी. नाउ व्हाट्स फिस्कल पॉलिसी? तो मैम आरबीआई के जो भी अमेंडमेंट्स है वो सब आते हैं उनको थोरो स्टडी करना होगा, है ना? हाँ, that's for monetary policy. Now regarding fiscal policy, all things regarding taxation, GST, direct taxes, okay, direct, indirect, both the taxes, what are the rules framed, and what is the motive of, like if and there is one piece of rule, for example, from this year onwards, your bracket is increased till 5 lakhs. So that is just a small piece of rule. But why that has been done? It is direct mode. The government wants to. It can have direct and indirect both impacts. Like first, direct impact is if their tax expense will get reduced, then their purchasing power will increase, their consumable income will increase, and it is going to affect demand side. Indirect is something like they will have motivation to earn more because they are required to pay now less tax. मतलब bracket बढ़ गया, यानी for another 1 lakh or 1.5 lakhs they are not required to plan something for saving of taxes, and this will motivate them to work more, and that is going to affect supply side, that if you will be more productive you will be contributing more to particular company where you are working, and by that way that company will have more productivity. So I am trying to explain you direct and indirect. So it one thing may have both the impacts, direct or indirect. So this particular piece of rule has both. Okay, understood? Yes, ma'am. हाँ मैम, अभी Okay. अच्छे से समझ में आया. हाँ. Start with every recent amendments, जैसे transition from all this excise duty and you know uh, then value added tax and all those converted into GST, मतलब transition from indirect tax code to GST. Okay, for indirect. So कस्टम्स. you need to read about those amendments, okay, and how these amendments are going to impact industry at large, sorry, economy at large, and after that industries in which you are interested into. Okay, तो वो इकोनॉमिक को एंटायरली कैसे अफेक्ट करेगा. जैसे जीएसटी के सेमिनार्स अगर आपने अटेंड किए हो तो दे वेर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट इंडस्ट्रीज. Like this industry, previously it had lower rate of indirect tax, but now after GST they have higher rate of tax, so they have to pay more, and that is going to suppress that their margin, and ultimately their profitability will get impacted. So ultimately this GST transition to GST has different impact on different industries. So when you are analyzing it from the fiscal policy point of view and particular Indian company, you have to check with this, that which rate previously it was paying and which rate right now it is paying, and how this company is going to manage with the difference. If it is getting increased, then whether they are going to increase their prices and how it is going to impact their competitiveness. ठीक है. बहुत सारी छोटी छोटी, मतलब एक छोटी चीज पढ़ोगे बहुत सारे फ्रेंड्स आपको मिलेंगे कि मैम, कॉम्पिटिटिवनेस पे. हाँ. टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ ऐसा हुआ था ना कि जीएसटी आई थी तो उन लोगों ने इसीलिए अपोज किया था क्योंकि उनको हायर टैक्स पे करना पड़ता था जीएसटी की वजह से. हाँ, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ये जैसे ब्लैक मनी काइंड ऑफ थिंग वो बहुत ज्यादा हम्म. चलती थी. बिलिंग वगैरह नहीं होता था, पेपर पे ही लिख के दे देते थे. ऐसे उनमें प्रॉपर बिलिंग नहीं होता है, वो ऑन पेपर, जैसे मैंने हैंड रिटन कुछ लिख के दे दिया और उसके बेसिस पे ही जो भी सप्लाईज मुझे चाहिए वो मिल गए, तो प्रॉपर बिलिंग ही नहीं था.
अब आपको जीएसटी आने के बाद आपको प्रॉपर बिलिंग एंड एवरीथिंग है ना, जीएसटी कोड से लेके बिलिंग एंड एवरीथिंग यू आर रिक्वायर्ड टू पे, तो उसकी वजह से हुआ था। दैट इज अनदर इश्यू, दैट इज अगेन काइंड ऑफ पॉलिटिकल इश्यू यू कैन से, है ना। बट इसका कोई इम्पैक्ट आया नहीं, अल्टीमेटली जो फॉलो करना है वो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। करना ही पड़ेगा। एंड हाँ, यू तो ऐसे एनालाइज करना है कि मैं अगर ये बोल रही हूँ कि अपोज हुआ है ना, तो उसका कोई इम्पैक्ट आया वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री पे, दैट यू आर रिक्वायर्ड टू चेक। तो लॉन्ग टर्म में आपको दिखेगा, जैसे दे वोंट बी एबल टू सर्वाइव। पहले वो बिल बनाते ही नहीं थे, तो लाइक दे हैड ह्यूज करोर्स ऑफ इनकम, है ना। अब वो इनकम नहीं मिलेगी, ह्यूज टैक्सेस दे विल बी रिक्वायर्ड टू पे एंड दे मे नॉट हैव दैट मच डिमांड, प्राइस बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है, दे वोंट बी मच कॉम्पिटिटिव। तो ऐसे हाँ, अपोज किया दैट पीस ऑफ न्यूज से आपको नेक्स्ट इंफॉर्मेशन मिली कि क्यों अपोज कर रहे हैं लोग, तो फिर आपको पता चला कि बिल विल से तो काम होता ही नहीं था, सब ब्लैक मनी में ही जाता था। फिर आप नेक्स्ट लेवल का एनालिसिस कर रहे हो कि तो फिर अब क्या, तो अभी क्या, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होगी, कॉम्पिटिटिवनेस सेम लेवल की नहीं रहेगी, है ना, एंड दे हैव टू अडॉप्ट लॉट मेनी मीन्स। तो अब ये पढ़ो, अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री, तो ये पढ़ो कि अब क्या करने वाले हैं वो लोग, अब कैसे कॉम्पिटिटिवनेस इंप्रूव करेंगे, प्राइजेस बढ़ाएंगे, है ना। एंड अगेन करप्शन भी हो सकता है, तो प्रैक्टिकली आप देखोगे तो मतलब वंस अगेन बिलिंग आने के बाद भी वो कुछ मिडल वे ढूंढ ले थ्रू करप्शन, तो वो भी हो सकता है। अल्टीमेटली व्हाट वी आर व्हाई वी आर एनालाइजिंग दिस small piece of information or rules to find out uh, the lucrativeness of that particular industry, or whether that industry is viable in long term, and if you are a genuine investor, should you invest in any textile unit or something, okay. यस मैम। ओके, ऐसा डायमंड वाले में भी बहुत हुआ था, बट इफ यू हाँ, चेक उसमें भी विथ हुआ था। रिलायंस एंड लाइक कंपनीज, तो ये जो आप बोल रहे हो उससे बहुत छोटे छोटे लोग थे उनको फर्क पड़ा होगा। रिलायंस एंड ऑल टाइप ऑफ कंपनीज विच आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज एंड दे आर इनटू टेक्सटाइल, एंड इन दोस स्टॉक्स वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट, तो उसके साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, ओके। यस सो मैम, गुड सूरत में पॉइंट हुआ था रेज। वो प्रॉब्लम। हाँ, तो दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट रेज्ड कि जब आप एनालिसिस करते हो ना, तो ये भी चेक करना पड़ेगा कि आपको क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो अगर मैं रिलायंस जैसी कंपनी में फॉर टेक्सटाइल से सपोज फॉर टेक्सटाइल आई एम इंटरेस्टेड इनटू, तो ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन पे ज्यादा मुझे फोकस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? सी, ये जो अपोज कर रहे हैं या बिलिंग से जिनको प्रॉब्लम है या ब्लैक मनी से जिनको प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड फर्म्स है उनको होने वाली है। नहीं, नहीं, उनको नहीं होगी। हाँ तो हाँ, उनको तो कंसिडर दैट नहीं आई करना। वांटेड टू, एंड दैट्स व्हाई आई टोल्ड दैट वेरी गुड पॉइंट रेज कि आप जब एनालिसिस करोगे ना, सी दिस इज अ काइंड ऑफ ओशियन ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर आप गूगल करने बैठोगे आपको इतना कुछ मिलेगा, बट सारी चीजें रिलेवेंट होती है? नो। Do we have that much time that we will waste in reading each and every statement, each and every piece of rule, and even spending time on analyzing that thing? जैसे ये तो आपने पढ़ लिया कि अपोज हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस ऑल ओवर इंडिया पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लोग अपोज कर रहे हैं, ठीक है, सो दैट इज द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। बट शुड आई डिवोट मच टाइम फॉर माई स्टॉक इन्वेस्टमेंट for this piece of information? Should I read more? Should I analyze it, that how it is going to impact on my decision of particular stock of textile, है ना। ओवरऑल टेक्सटाइल के लिए कितना प्रॉब्लम हुआ जीएसटी आने के बाद, वो आप स्टडी कर सकते हो। और अगर कंपेयर टू अदर इंडस्ट्रीज ऐसे लग रहा है कि जीएसटी का इम्पैक्ट बाकी की इंडस्ट्रीज से टेक्सटाइल पे ज्यादा होने वाला है, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि एटलीस्ट फॉर 2 to 5 years यू वोंट बी कंसिडरिंग टेक्सटाइल, क्योंकि जैसे लाइक जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, एवरीबडी, एवरी इंडस्ट्री, एवरी कंपनी विल ट्राई टू अडेप्ट टू न्यू कोड, ठीक है।
So once they adapt it, once they again be competitive into market, you can think of that. So for particular industry, hello, हाँ मैम, आपने म्यूट कर दिया था। हाँ सॉरी बाय मिस्टेक हो गया। सो व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग कि आप क्या पढ़ रहे हो, उसका कहाँ पे इम्पैक्ट हो रहा है, वो जो इम्पैक्ट है वो मेरे काम का है कि नहीं, मैं जो एनालिसिस कर रही हूँ वो अल्टीमेटली मुझे कुछ कंक्लूजन देगा कि शुड आई इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री और शुडंट आई। ओके, तो ये भी देखना है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या एनालिसिस करना है। ठीक है, ओके। So, fiscal policy is concerned with the spending and tax initiatives of the government. It is the most direct tool to stimulate or dampen the economy. An increase in government spending stimulates the demand for goods and services, whereas a decrease deflates the demand for goods and services. Now, increase in government spending will be like we see in budget, that first planned spending, planned expenditure, government would be deciding, and then after how it can raise those funds, and for that they will be deciding the direct uh, income tax and indirect income tax, GST. Okay, so yes, how it can stimulate by spending more. So if they want to as in government, if government wants to spend more, then it has to raise more as tax. Again they have to raise direct taxes, indirect taxes and all. Okay, so this, what this exactly will do, that it will stimulate demand because they are spending more. But at the same time, for spending more they are raising more and they are charging high income tax. Okay, and indirect, direct and indirect, both the kind of taxes. So this will have another kind of impact. Okay, so by the same token, a decrease in tax rate increases the consumption of goods and services. So this is talking about reverse. First point talks about increase in tax rates. So increase in tax rates will stimulate demand for goods and services of industries. Okay, of industries. But if we talk from the public point of view, people like us, demand is going to decrease क्योंकि taxes बढ़ रहे हैं, तो products will be costlier, then we will have less purchasing power, we will have less consumable income, so it will be every time it will be two front. But here we are talking from corporate point of view, companies point of view. So yes, demand, intermediate goods demands and services will rise. Okay, the next point is talking about decrease in tax rate increases the consumption of goods and services, and increase in tax rate decreases the consumption of goods and services. So this is consumption means spending of people like us, demand from population. Okay, so what this particular slide explains the relationship between variables, theory part, that how this variables are related. So if you are analyzing any piece of rule or any piece of information, first of all you need to have sound knowledge of theory, how those variables are related, that you need to understand first, then and then only that relationship you can use for analysis purpose, for particular piece of information or for particular piece of news. Understood? Yes मैम। Okay, I think this analysis or this kind of what we can say theoretical understanding we had at the time of your macroeconomic इकोनॉमिक्स, यस। हाँ. So this is just revision. But exactly if we want to relate it with practical analysis, then yes, you have to find out that kind of information, piece of news, piece of rules and regulations, change in rules and regulation, which is going to impact economy as well as certain industries. And for analysis purpose, you will need this knowledge of variables relationships and all, how this particular variables are related.
तो फिर आप एनालिसिस कर पाओगे, है ना, इंफॉर्मेशन जो भी आप पढ़ रहे हो उसकी। व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू एक्सप्लेन, अगर वो आपको वो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन आस्क योर डाउट। my for this particular subject my orientation is towards practical more than theory, क्योंकि ये theory already आपने कहीं ना कहीं पढ़ी है, तो you know the relationship of variables, you know the theory part. Okay, now how this knowledge could be applied for analysis, I think your point of your interest should be in that, कि हम जो पढ़ रहे हैं थियरी उसका एनालिसिस में कैसे यूज करें, relating it with practical information or rules and regulations, actual rules and regulations, right? So this was about fiscal policy. Okay, this is direct. Indirectly, again I have explained कि अगर आप टैक्स रेट कम होता है ना, कॉर्पोरेट्स का एंड इंडिविजुअल्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, तो क्या होगा, दे विल हैव सर्टेन लेवल ऑफ मोटिवेशन टू वर्क मोर, and that will, so that is supply side. So the economies or governments which are following indirect kind of philosophy, they want to boost supply, they'll be taking this front, like they'll be reducing taxes, or maybe for time being they'll be making tax rate stables, not every now and then they'll be increasing. Okay, and indirect side, the supply side push has more impact on productivity of industries companies than the direct side. ओके, तो डायरेक्टली आप डिमांड को इफेक्ट करने की ट्राई नहीं करोगे, इनडायरेक्टली सप्लाई को इफेक्ट करने की ट्राई करोगे। बट वंस अगेन मैंने जैसे बोला कि गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है फॉर पॉलिसी फ्रेमिंग, रूल्स फ्रेमिंग एंड ऑल। ओके, सो दिस वाज अबाउट फिस्कल पॉलिसी। नाउ नेक्स्ट इज मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में आप बताओगे, एक्चुअली ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। यस मैम, बोलो। related to interest rate, increase or decrease in interest rate. Okay, so how it is going to affect demand and supply side? मार्केट में मनी का सप्लाई रिड्यूस और इंक्रीज करने के लिए, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मोस्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी यूज की जाती है। इसमें आरबीआई बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के में चेंजेस करते हैं। हाँ, Yes, exactly कैश right. रिजर्व रेशियो। मैम बोल रहे थे, सुन तो हम्म, हाँ हर्षदा आप बताओ। मैम वही जो काजल ने बोला, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ये सारी पॉलिसीज यूज की जाती है, तो इसी को हम डिमांड और सप्लाई वे में भी देख सकते हैं। हाँ, वो कैसे एक्चुअली we are interested into that, means main purpose is right, exactly right, that inflation and deflation will gets managed through monetary policy measures, different monetary policy measures, but they are ultimately going to affect demand as well as supply side both, and we as an investors are interested into that how demand is going to be affected, how supply is going to be affected at economic level as well as at particular industry level. Okay, because next step after doing your macroeconomic analysis or say suppose economic level analysis, you are going to do your industry analysis. So at this stage you will be doing two kind of analysis as an economy overall, how which type of growth rate it will have in future, मतलब overall development कैसा है particular in economy का, and next level, एक ये level हो गया कि economic level development कैसा रहेगा in future, and another like industrial level. If we talk about different industries, so how it is going to impact different industries, which industries are going to grow more, which industries are going to grow less due to certain type of support. Okay, due to certain type of measures or support
through this type of tools, fiscal policy and monetary policy, so that you will be at second level, you will be able to cut short in, or you will be, you know, screening all your industries, that at particular this point of time for 2 to 5 years, next 2 to 5 years, which industries should be targeted for investment, and which industries have more prospect of higher level of earnings and profitability, so that from that certain stocks you can pick, and ultimately you can invest into those companies. Okay, तो why we are learning this, धीरे धीरे पर्पस पता चल रहा है आप लोगों को? Yes, हेलो. ma'am. Okay, and now Yes, you people ma'am. may be able, हाँ, now you people may be able to understand कि आप इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे थे, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे थे, है ना. इवन माइक्रो इकोनॉमिक्स ये विल बी यूजफुल एट कंपनी लेवल, कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल कैसे मैनेज करे, कॉस्ट कैसे रिड्यूस करे, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाए, तो उसमें पूरा माइक्रो इकोनॉमिक जो भी आएगा एनालिसिस वो यूजफुल है. And for your this economic level analysis, for even for investments, your macroeconomics will be useful. तो मतलब आप एमबीए में जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हो वैसे ही नहीं पढ़ते हो, इट हैज सर्टेन यूज. ठीक है. And now as a matter of your second module, you'll be learning only two tools, that is fiscal policy and monetary policy. But if you check your syllabus in macroeconomics, you will come to know that entire chapter you have learned, है ना. एक्सेलरेशन कैसे होगा, है ना. क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होती है, एक्सेलरेटिंग इफेक्ट क्या होती है ऑफ पर्टिकुलर rule or particular like say suppose any tool. Okay, so if RBI is using particular tool, so which type of crowding out effect it could have. Okay, तो ये सारी चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, और वो जो डिटेलिंग में पढ़ा था पूरा चैप्टर, दैट विल बी यूजफुल हियर फॉर योर इकोनॉमिक एनालिसिस. सो स्पेशली फॉर एनालिसिस, जैसे न्यूज पढ़ना, या यू टू बी अवेयर रिगार्डिंग द लेटेस्ट थिंग्स, लेटेस्ट ट्रेंड्स, लेटेस्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस, गूगल विल बी हेल्पफुल. बट वो पढ़ने के बाद उसमें से मीनिंगफुल कंक्लूजन्स, to draw meaningful conclusions, so that based on that we can take certain decision. तो उसके लिए थियरी इंपॉर्टेंट है कि आप ये जो चीजें पढ़ते हो उसको एनालाइज कैसे करोगे, एनालाइज करने के बाद कुछ चीज कंक्लूड कैसे करोगे कि कौन सी इंडस्ट्री में या कौन से कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए. सो दिस इज रिगार्डिंग डिसीजन मेकिंग. तो डिसीजन मेकिंग में एनालिसिस हेल्पफुल होगा, और ये एनालिसिस कैसे करोगे, दैट यू आर गोइंग टू लर्न थ्रू थियरी. So that way your theory is important. Okay. यस मैम. Okay. नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है, तो अगर यहाँ जितना भी एक्सप्लेन किया उसमें कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में यू कैन राइट नाउ यू कैन नोट डाउन एंड आस्क इन नेक्स्ट क्लास. ठीक है. ओके मैम. और आज मैं टास्क नहीं दे रही हूँ बिकॉज लॉट मेनी पीपल couldn't डिस्कस अबाउट their कंपनीज, एंड few people even didn't read. तो नेक्स्ट क्लास में यही टास्क है आपका कि आप बाकी के लोग जिन्होंने आज नहीं बताया वो बाकी के लोग बताएंगे रिगार्डिंग देयर हेलो कंपनीज. मिस. हाँ बोलो. मिस मिस असाइनमेंट कल हमको सबमिट मेल के थ्रू करना है आपको. नहीं, गूगल क्लासरूम क्लासरूम पे से ही ही करना है. सारी चीजें, ओके. so that at the semester end I need not find each and everything here and there. ठीक है. मुझे एक ही जगह पे सारी चीज चाहिए कि आपको आउट ऑफ 50 मार्क्स देने हैं, है ना, समथिंग लाइक दैट. छोटे छोटे ओके मिस. असाइनमेंट्स मिलके आपके 50 मार्क्स होंगे, तो मार्क्स देने के लिए फिर इधर उधर मुझे ढूंढना नहीं पड़े, इसीलिए क्लासरूम बनाया है. ठीक है. इवन आई नीड टू इवेल्युएट माई सेल्फ कि मैंने आपको क्या क्या मटेरियल दिया था, क्या कितने चैप्टर्स का मटेरियल, बिकॉज एवरीथिंग इज ऑनलाइन राइट नाउ, तो बुक भी नहीं है आप लोगों के पास, तो मैंने क्या मटेरियल दिया, क्या पीपीटी दिया, आई शुड हैव रिकॉर्ड. तो जो भी कम्युनिकेशन हमारा होगा थ्रू गूगल क्लासरूम ही होगा. और इनकेस किसी को नहीं आता है तो फ्रेंड्स की हेल्प लेके सीख लो.
क्योंकि वो क्लासरूम कम्युनिकेशन ओके ही अलाउड है, हाँ, और कोई अलाउड नहीं है। तो अपलोड करना, डाउनलोड करना, ये सारी चीजें आई डोंट थिंक कि किसी को प्रॉब्लम हो रही होगी, बट स्टिल अगर हो रही है तो सीखना पड़ेगा। मैम होगी तो हम सब फ्रेंड्स हैं ना, एक दूसरे की हेल्प करने के हाँ, लिए। एक दूसरे को समझा देना, हेल्प कर देना। ठीक है, ओके, सो शुड वी एंड? यस मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। एक ही चीज है, ये जो अभी आप पढ़ रहे हो ना, वो इतना वास्ट टॉपिक है ना कि आपको इतना इजीली नहीं समझ में आने वाला। तो ऐसे जैसे मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ ना, वैसे छोटे छोटे न्यूज़ेस, रूल्स पढ़ के उसको एनालिसिस करने की, रिलेटिंग विथ मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इकोनॉमिक एनालिसिस, उसको एनालाइज करने की ट्राई करो, माइन्यूट यस लेवल पे, छोटी छोटी चीजें। तो मैम, धीरे धीरे धीरे, इकोनॉमिक्स में हमने सिर्फ थियरी पढ़ी थी, तो अभी हाँ हमारे लिए नया ये एनालिसिस ही है। हाँ, तो मतलब अभी आपको एनालिसिस ही करना है, कनेक्शन। बेस्ड ऑन दैट। ठीक है, यस मैम, बाय, हैव अ थैंक यू नाइस डे। मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।